Okay, sorry. Okay, now, sorry, I think you might have heard me saying a few things, so I had stopped the recording. Now I have switched it on. Okay, so the second order differential equation then becomes okay. So as you can see, so the second order differential equation then becomes equation 10. तो इसमें अब क्या हुआ कि जो पहले आपने देखी थी, हम ऊपर वापस जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इसमें आप देख सकते हैं r by l, we have r by l and 1 by lc. So these two things have been by well, defining zeta and omega n has been replaced in equation number 10 as 2 zeta omega n, which is then r by l and omega n square. So this is what we call, well, this is a homogeneous differential equation in terms of zeta and omega n. Now, well, these are two coefficients. Obviously, we have replaced coefficient r by l with 2 zeta omega n. So that's one coefficient. That's combination of two coefficients, zeta and omega n. Two constants, and 1 over LC as omega n square, which is another constant. Note that we have replaced 3 constants related to our circuit into 2 constants. We have obviously replaced 2 coefficients by 2 constants, but from circuit point of view, we have replaced R, L and C kind of combined together, and we have defined two things, zeta and omega n. Now, based on zeta and omega n, we are in a position to say some things about that RLC circuit, or the natural response of the RLC circuit. But before that, we will be writing response in terms of ये जो इक्वेशन नंबर 9 आर और एल कैसे आया? मोहम्मद सलमान, जी सर। मोहम्मद सुलेमान जी जी, हाँ जी, बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। Okay, equation number 9 is simply, we have written 2 zeta omega n. Zeta is r over 2 under root c by l, right? So this is zeta, r by 2 under root c by l. What is zeta? Zeta is ratio of actual resistance to critical resistance. What is critical resistance? Critical resistance is the value of that resistance which may or may not be resistance of your circuit, but it is that resistance which will make this radical term go to 0, or in other words, give us two roots which are real and equal. So in 3 we have, now if you assume that this guy is 0 equal to 0, ओके, अगर आप इसको इस तरह कर लें तो क्या होगा, चूंकि रूट्स दो है ना,
दो रूट्स का मतलब है कि दोनों ही अब -r/2l के बराबर हैं। सो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस जो हो भी सकती है, हो सकता है कि आपके सर्किट की हो या ना हो, जो कि इसको जीरो कर देती, तो आपके एक्चुअल से जब आप उसकी रेशो लेंगे oh man, I think I have to take some action about that. If you are not careful about muting and unmuting yourself, I will have to forcefully mute everyone, and then you will have to raise your hand before that will then waste some time. So please take care about take care of this thing. You have to be careful about muting and unmuting yourself. Obviously, I have always unmuted myself because I'm the presenter. So whatever I speak here, you have to listen to me. जो भी यहाँ पे पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी जोड़ा भी मैं बोलांगा तानू सुननी पैनी, because I'm the presenter, right? Okay, so Muhammad Suleiman, have I answered your question or no? Muhammad Suleiman. पर देखें इक्वेशन नंबर 9 सामने करें जी सर, इसमें जो 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है जीटा और ओमेगा एन के साथ, ठीक है। सर जब हमने वैल्यू अंदर डाली है तो 2 से कट जाएगा, अंडर रूट सी और ओवर जो है ये कहाँ जी है? जी, अंडर रूट सी ओवर एल किधर चला गया है? अंडर रूट सी ओवर एल कहाँ चला गया भाई? चलो जी हूं दसो ना, अंडर रूट सी ओवर एल किधर गया? कौन बताएगा भाई अंडर रूट सी बाय एल किधर गया? कोई बता सकता है? सर दूसरी तरफ ओमेगा था ना, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, तो इस वजह से इस तरफ इसमें नहीं, इसमें जो ओमेगा एन है ना, ये भी you have not noted this thing. This guy is actually under root also itself. यहाँ पे मिस्टेक से ये लिखा हुआ, ये जो LC है, there is an under root with this LC, because by definition omega n is 1 over under root LC. There are deliberately some mistakes in the book that is also I mean, of course I have just taken the equations from the book, so there are some deliberate mistakes. That is for, as someone has pointed it out, very good, किसी ने ये सवाल पूछा कि ये किधर चला गया, तो ओमेगा एन जो है ना वो अंडर रूट LC है, तो यहाँ पे अंडर रूट नहीं लगा हुआ, तो अंडर रूट से कट गया और अंडर रूट L ये L हो गया, तो R/L आ गया. So you have to be that's a good thing. Somebody was vigilant. Okay. So now we are in a position to say a few things about the general behavior of this differential equation. But before we do that, we would like to write the roots in terms of zeta and omega n. पहले जो roots थी वो in terms of RLC थी, अब ये roots जो है ना सिर्फ zeta और omega n, they contain only zeta and omega n. As you can see in equation 13, they contain only zeta and omega n instead of RL and C. So since we have two roots now in terms of zeta and omega n, we can write the general solution of this RLC series circuit
as equation number 14, right? So instead of e to the power, so this is basically e to the power s1. And what is missing in equation number 14? Can somebody tell me? What is missing in equation number 14? There is something missing in equation number 14, and you will have to tell me. सर टाइम मिसिंग है. Ji, sorry. टाइम 5. टाइम सर टाइम टी. Time. Yes, very good. Time is missing. That's true. T is not written here. So the equation actually is I is equal to K1 e to the power S1T plus K2 e to the power S2T. So time is missing in equation number 14. और ये कौन था जिसने जवाब दिया? हारून मलिक? जवाब पता नहीं किसने दिया? यस सर. हारून मलिक. अच्छा जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा. ये यहाँ पे टाइम मिसिंग. तो 14 is now in terms of zeta and omega, and let's see what do we get from there. But before that, we would like to introduce another definition, which is what is called circuit Q. So this is Q of a circuit. In this case, this is Q of an RLC series circuit. So we define it as omega n into L by R. And by using this omega n L by R and writing it as Q, we can actually, I mean, that manipulation is not shown on the slide, but you can kind of try to do it yourself. We can write equation 15 in terms of Q. So this will be then in terms of Q and omega n. So one coefficient that is that one remains the same, omega n square, but the coefficient with di by dt term becomes, instead of 2 zeta omega n, this becomes omega n over q. So q is 1 over 2 zeta. You can try your way backwards. So substitute 1 over 2 zeta here in 16, and then you can retrieve the value of zeta. So Q has a relationship with zeta. So what is what's the benefit of Q? That's I mean, you may ask. Okay. So this is kind of measure of how much, well, I would rather like to, since zeta is equal to R over 2 under root C by L. So obviously then Q is 1 over 2, well, this would be 1 over 2 R under root L by C, and that's what we will be having. So 2 and 2, that they will be cancelled out. So actually this tells you, if this number is bigger, that would tell you that this circuit will take more time. I mean, in case of this RLC series circuit, it will take more time for this circuit to get all the current dissipated in the resistor. So this is kind of telling you that now L and C elements can hold energy for a longer period of time. So if you have shorter Q, elements can hold energy for a shorter period of time. If you have a larger Q, the elements can hold energy for a larger period of time.
तो जो एनर्जी बैक एंड फोर्थ हो रही होगी इंडक्टर और कैपेसिटर में, उसको डिसिपेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। वैसे भी ये 1/2 जीटा से, क्योंकि जीटा इज अ मेजर ऑफ well, that's a measure of damping, so this is basically a measure of inverse damping. सर आप ये थोड़ी नोट्स जूम कर सकते हैं? I don't see anything here. Maybe let me try this thing. सर ये व्यू के अंदर या ये जो क्या कहते हैं सर्च बार वाला बना हुआ इधर से शायद हो जाए। नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये व्यू में मैं देखता हूँ अगर हो गया तो। हाँ, ये है कि शो सर्च, ये तो शो सर्च है। यहाँ देखते हैं, शायद ये तो वर्जन है। और ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास हैंड हेल्ड डिवाइस है ना? सर ऐसा करें ना, वो कीबोर्ड क्या लैपटॉप का जो है ना उधर कंट्रोल दबा के ना, तो वो कर्सर का होगा ना दरमियान वाला, उसको थोड़ा दबाएं तो वो जूम हो जाएगा। तो ये उस तरह जूम नहीं होता यार, वन नोट। ये बस इसको इसी तरह ही करें। आपके पास क्या है, अपना हैंडहेल्ड डिवाइस है, मोबाइल फोन है? नहीं सर, मेरा लैपटॉप पे है। लैपटॉप के ऊपर क्या मसला है यार? मैं भी लैपटॉप के, मुझे लैपटॉप पे तो सारा कुछ सही नजर आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, ये तो सर ये वैसे हैंडहेल्ड जूम डिवाइस। हो सर ये वैसे जूम हो जाता है। आप इसके ऊपर स्क्रीन, कोई बच्चा खुद ही मतलब आप लेक्चर सुनते हुए भी जूम कर सकते हैं। कोई भी मेरे बच्चा पास बस वो स्क्रीन को जूम करते हो जाता है। मेरे पास जो हैंडहेल्ड डिवाइस है ना, मोबाइल के ऊपर तो मैं इसको यानी ये जूम हो रहा है मेरे पास मोबाइल के ऊपर। तो जो लैपटॉप के ऊपर जो आप देख रहे हैं, ये वहां पे जूम हो जाना चाहिए अगर मेरे पास जूम हो ठीक रहा होगा था। सर, ठीक होगा सर। Okay, now we, after we have defined Q, as you can see, it's a little bit slow, so probably okay. Anyways, I think we focus on these roots, right? ठीक है जी, ये 18 की बात, 18 समझ में आ गई है ना? ये रूट्स हैं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिनके कोफिशिएंट्स को जीटा और ओमेगा इनकी फॉर्म में लिखा हो। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि पहले भी हमने ये बात की थी कि रूट्स रियल और इक्वल उस वक्त होंगी जब r ओवर व्हाट वाज दैट, r by 2l square that becomes equal to 1 over lc and so on. In that case the roots will be real and repeated, and real and equal, or real and equal. और उसी तरीके से अगर आपके पास j ऑफ समथिंग सोल्यूशन आ जाए, यानी अगर सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो तो उस केस में रूट्स जो है वो 2 होंगी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगी, वगैरह वगैरह। तो अब हम वही जो 3 चीज़ें हमने पहले देखी थी, अब हम उनको जीटा की टर्म्स में देखेंगे। पहले वो रेडिकल की टर्म्स में थी, तो अब ये एक नंबर जीटा की टर्म्स में आ गई। अब आप देख सकते हैं, अगर जीटा, if zeta is greater than 1, then clearly in 18 roots will be real and unequal. They will be real and unequal, right? Zeta is greater than 1. In case 2, if you have zeta equal to 1, then your roots will be real and repeated. And if your zeta is less than 1, then your roots are complex and conjugate. So what is locus of roots, or we will be calling it in a future lecture. I think, I don't know if control system is now, I think it's also in
semester 5th or 6th probably, we will be introducing a kind of plot which will be called root locus plot. So what is the locus of roots? It is the locus that your roots trace when we vary zeta from 0 to infinity. तो जब हम अपनी इक्वेशन के किसी पैरामीटर को 0 से इन्फिनिटी तक वेरी करेंगे तो रूट्स जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में लोकस ट्रेस करेंगी उनको, उस प्लॉट को हम कहेंगे रूट लोकस और लोकस ऑफ रूट्स, प्लॉट ऑफ लोकस ऑफ रूट्स. So when we vary zeta from 0 to infinity, this basically well traces somehow in complex plane. So before we introduce or we show you that plot, we would like to have a look at the roots themselves. Roots are, they consist of two parts. Obviously one part is the real part. Okay. So this one is basically real part and this part is. Now this part can be real or, well, I'm going to write it, this is imaginary. So we have two parts. One is for sure always this is real, minus zeta omega n. Omega n is a number and zeta is a number, so we get that. The second part, this can be, well, real, and in, obviously I have missed, okay. So this can be real or imaginary. Now, obviously it is this one. किस सूरत में ये इमेजिनरी होगा? जब आपका जीटा स्केयर जो है, whenever you have well we say it like, whenever you have zeta less than 1, whenever you have zeta less than 1, this red part is going to be imaginary. In that case, combined with the real part, it will give you a complex number. So if you look at this complex number in this complex plane, this S-plane is basically complex plane, and it has two parts. Well, the horizontal one is what we call sigma part, or the real part, and this vertical one is complex part. So I'm going to write it. So each S is equal to sigma plus j omega
each S is sigma plus j omega, right? So in terms of a vector, this is sigma plus, no, the sigma in our case, the sigma is negative. So what is the sigma in this case? The sigma is zeta omega n. And what is this omega? Omega is equal to omega n under root zeta square minus 1. Okay, so he has written it, this thing here. So sigma is zeta omega n. In our case, sigma is minus. So what we have here is in our particular case, our this one is what we should say damped omega n. So we have an undamped natural frequency, which is omega n, and we have a damped frequency, which is omega. Okay, तो ये थोड़ा सा जो है लिखने में थोड़ा सा देर लगा देता है. ओके, ठीक हो गया जी. तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर रूट जो है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. दिस इज सिग्मा प्लस j omega. Obviously its value can be in the right half plane and also in the left half plane. Remember, always remember, whenever we have components R, L and C, we call them passive components. And why were we calling them passive circuit components or passive network components? What was the reason? Anyone? What was the reason? Okay, I'll tell you the reason. But whenever you have passive components, the solution of the homogeneous differential equation, the roots of the characteristic equation will never be in the right half plane. Okay, they will never be in the right half plane, which is this one. I would like to let's not select pink because this one may offend someone. So okay, so let's select brown. So this is the plane with so on the right half side you won't see any S here. I mean, if someone tells you that I have an S1 on this side and it is here, or I have S1 which is here, and this S1 corresponds to an RLC circuit, then either this S1 does not correspond to an RLC circuit or that person has made some computational mistakes.
So maybe I need to remove these two. Okay. So for a passive circuit, your root of characteristic equation will never be on the right hand side of this j omega line. j omega के ऊपर हो सकती है, रूट जो है वो j omega पे हो सकती है, रूट j omega पे जरूर हो सकती है, लेकिन राइट साइड पे नहीं हो सकती जब भी आपके पास पैसिव सर्किट होगा। एक्टिव सर्किट या एक्टिव नेटवर्क्स जो हैं उनकी कहानी थोड़ी सी फर्क होगी। तो अब हम बात करते हैं पैसिव नेटवर्क्स, यानी पैसिव का मतलब ये है कि ये या तो एनर्जी स्टोर करेंगे या एनर्जी डिसिपेट करेंगे, ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेंगे। पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, पैसिव नेटवर्क एलिमेंट्स वो हैं जो या एनर्जी स्टोर कर लेते हैं या उनको इस्तेमाल कर लेते हैं या डिसिपेट कर दें, but they will never be producing some energy. In that case, the roots will never be on the right hand side. They will always be on the left hand side, and that's why he has, he has safely, it can safely be said that sigma will always be minus zeta omega n. So in the case of passive networks, we can simply add here a minus, and in this case also a minus. We will be call them stable networks. So the idea of stability will be introduced later. Right now we are just looking at the solution itself. Okay. So the vertical component is omega n under root 1 by or zeta square. Obviously if you want to have that, then of course zeta square is less than minus. Zeta square is less than 1. So we can write this part as omega n under root 1 minus zeta square, and we get this line, and this S1 in terms of a vector is shown here. So it has a horizontal component and a vertical component, and similarly the other part with a negative omega n thing. Now, assuming that omega n is same or constant, what happens if we vary zeta? So we note that sigma square plus omega square turns out to be omega n square. This is obviously a question of a circle. So equation number 20 is equation of a circle. In this equation, we vary zeta, and whenever we have zeta is equal to 0, our roots are at this point. Okay, so since it's a bit of a challenge, so I'm going to circle this. So whenever we have zeta is equal to 0, one root is here and the other root is here. Interestingly, it doesn't register sometimes what we have done on the mouse, but I can delete it. And then go back to this. Okay, so whenever I start increasing zeta, I start getting the values of the roots, as they will then be tracing a circle. And when I get zeta, when I have zeta is equal to 1, both the roots, they are at this point. And after that, when I increase the value of zeta, they basically, one goes to this side and the other one goes to this side. And you can see that
we keep on increasing zeta, and one root basically well, it starts going towards the origin of the complex plane, and the other one starts going towards infinity. तो एक रूट जो है उसका जीटा सॉरी उसकी जो वैल्यू है this can I think you can kind of since s is equal to minus zeta omega n plus omega n under root 1 minus zeta square, and the other one is minus zeta omega n minus omega n under root 1 minus zeta square. Sorry, so I think this is will take some time again. But I think you can kind of guess this thing from here. जब आप जीटा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो आपके पास जीटा बढ़ाने से ये थोड़ी सी यहाँ पे किसी मिस्टेक हो गई है, ये मुझे कुछ और लिखना चाहिए था, बहरहाल इसको बाद में भी मिटाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर जीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए यानी 1 से ज़्यादा हो जाए तो चूँकि एक रूट प्लस हो रही है और एक रूट माइनस हो रही है, तो जो तो रूट माइनस हो रही है ना, जो यानी जो आपके पास प्लस होती जा रही है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सॉरी, जो माइनस हो रही है माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ओमेगा एन अंडर रूट दैट, उसकी वैल्यू तो इंक्रीज होती जाएगी, और जो जीटा ओमेगा एन के साथ जहाँ पे जिस रूट जो प्लस वाली रूट है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक की वैल्यू कुछ इधर जाती जाएगी और एक कुछ इधर आना शुरू हो जाएगी। The other one I have kind of I hope this gets through. ठीक हो गया जनाब। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है और वो है रिलेशनशिप बिटवीन zeta and this theta. I can go back here. Here you can see that there is something marked theta ms. Forget about this m. This angle is theta. So this is basically the angle between the vector that joins the origin to the location of S1, the angle between that vector and the horizontal. That is your theta.
ओके, इस लाइन की लेंथ क्या है? ये मैं भी इसको ग्रीन करने लगा हूँ, आपने इसकी लेंथ बतानी है। बड़ा आसान सा सवाल है। ये जो ग्रीन लाइन है इसकी लेंथ क्या है? क्यों जी, ग्रीन लाइन की लेंथ क्या है? zeta omega n. Yes. So it was very simple question, but probably. So the length of the line is zeta omega n, and the length of this vertical line is obviously omega n under root 1 minus zeta square. So what is the relationship between uh, these two and theta? So we can kind of simplify that, and by using this kind of normalized length 1, we can by using this normalized length 1 and this theta, we can express the relationship between theta and zeta as theta is equal to cos inverse of zeta. And also, since zeta is related with q, so theta can also be related with q. So we have these two relationships also. And also for zeta, whenever we have zeta greater than 1, we can, well, we have this thing 23, जो कि मैंने ऊपर गलत लिख दिया था. Roots are negative and real, etc. Okay, so here is, so these are the response or the solution I of t that corresponds to the location of the roots. रूट्स की लोकेशन पे डिपेंड करते हुए जो आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की फॉर्म वो इस प्लॉट में दी गई है. यानी अगर आपके पास रूट जो है वो रियल लाइन पे होगी तो सॉल्यूशन would kind of look like that. Whenever you have complex conjugate root, so your solution would be, well, if it is towards the left of your complex complex right of plane, यानी जितना आप लेफ्ट पे जाते जाएंगे उतना ही आपका ये जो आप देख सकते हैं, इसको लाइन हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं, we kind of try to choose a line which is smaller one. And try to, okay, so note this thing. तो ये जो स्लोप आपको नजर आ रही है, जो कि हमने पिछली बार बात की थी कि दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू दैट e to the power minus of t thing, and the rest was sine of omega t. तो ये जो स्लोप है इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी रूट राइट की जानिब जा रही है, ये स्लोप कम होती जा रही है, और जब आपकी रूट जे ओमेगा पे आ जाएगी तो ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, which tells us that if you go to this side
you will be having thing like that, यानी ये जो इसकी जो स्लोप है और ज़्यादा होती जाएगी और मज़ीद आप लेफ्ट पे चले जाएंगे, ये उससे भी तेज़ हो जाएगी। ताहम जे ओमेगा के ऊपर ये लेंथ चूंकि चेंज नहीं हो रही, लिहाजा ये जो फ्रीक्वेंसी है ये सेम रहेगी, दिस फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम। एंड नाउ इफ यू say for example r on this point, if your I mean the real part of the root is on this point on sigma axis, then if you change the vertical part is, remember the vertical part is omega n under root 1 minus zeta square. So the vertical part is omega n under root zeta square minus 1 or 1 minus zeta square, I mean depending upon the context. तो इसको जब आप इंक्रीज करना शुरू करेंगे, so you can see that frequency is increasing. However, the slope, it is the same. Slope same है और frequency increase कर रही है। और अगर आप एक ही पॉइंट पे हैं और सॉरी जे ओमेगा के ऊपर आप एक ही पॉइंट पे हैं और लेफ्ट की जानिब जा रहे हैं, तो स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। ठीक हो गया? So that is how you can kind of relate the roots, and we would now like to remove them. So any question up till now? क्यों जी, अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ये आर्टिकल हमारा खत्म हुआ, अब हम इससे अगले वाले पे चलते हैं, which is general solutions in terms of zeta, q and omega n. So if you have any question, you can ask. हाँ जी. So I believe there are no questions. So I have to okay, I'll do it later. So in the next part, I'm going to. Okay, so how's the feedback up till now? ये अभी जो स्लाइड्स के साथ आपने किया है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा बेहतरी फील हुई है? सर आगे से काफ़ी बेहतर है। इसके साथ ना वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया करें, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। मतलब फिर कंपैरिजन का अगर उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत मेन पॉइंट लिखे हुए हैं तो साथ वो भी डाल दिया करें, ताकि हम फिर इधर से पढ़ेंगे, फिर बुक से पढ़ेंगे, ज़्यादा समझने मेन में। तो किताब के अंदर है चीज़ें हुई दी हुई है ना वो, और बाकी चीज़ें मैंने बोल दी हैं। चलो वो कुछ मेन पॉइंट लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन उनकी है थे अपना क्या उसे कहते हैं, इसको
वो तो नहीं बनाया जा सकता ना, जो आपने एफएससी में रट्टे पुट्टे लगाए थे ना, इसमें कुछ आपने अपने आप के साथ भी, अपने आप से भी आपने सवाल करना है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. And of course I'm also describing the things. Things are also described in your book, and there are reference books that I have already okay, I'm going to probably share with you now a few more things. I'll try to add description if possible, but somehow you also have to explore a few things. But anyways, thank you for the suggestion. I'll try to incorporate that. सर उसमें ये होगा ना कि जब हम जो ये जो आपने बनाई है ना, अभी जो वन नोट बनाया है, ये भी अगर आप किया बना आप, तो ये भी है वन नोट ये जो चैप्टर आपने आपके पास है, ये आपके पास रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड जाके खोल के देख लो, पूरी चीज रिकॉर्ड हुई हुई है. वीडियो शेयर करना क्या है इसको? सर नहीं, वो ये जो आपने स्लाइड बनाई है ये स्लाइड किताब उसी वहीं से बनाई है ना. स्लाइड के अंदर मैंने एक्स्ट्रा चीज तो डाली कोई नहीं. ये तो डिट्टो मैंने किताब के अंदर, बल्कि स्लाइड के अंदर कम चीजें हैं, किताब में शायद थोड़ी ज्यादा चीज होगी. I don't see any point in sharing a smaller thing whenever you have a bigger thing. Okay, I think so